Good morning, students. Today we'll be starting with a new chapter called Quadratic Equations. Okay, it's a very easy topic and I'm sure you will enjoy it. Okay, let's start with the definition of quadratic equation. Any equation of the type ax squared plus bx plus c equal to 0 is called quadratic equation. Here, the condition is that this a should not be equal to 0. Because if a is equal to 0, then what will happen? If a is 0, then we'll have equation as bx plus c only, which will become a linear equation. The power of the variable is 1, so it will become a linear equation. Yes. So in order to protect quadratic equation, in order to protect x square, a should not be equal to 0. That is the only condition. And ABC can be any value. They can take any real value. Yes, they can assume any value. They could also take imaginary values. Okay. But for now, we'll say ABC belong to real. Any real number they can assume. For example, 2x square plus 5x plus 3. This is a quadratic equation. Because as you notice, the power of the variable is 2. The maximum power of the variable is 2. Similarly, minus 3x square plus 5 equal to 0. This is also a quadratic equation. Yes. Is this a quadratic equation? X plus 1 by x equal to 1 by 2. Is this a quadratic equation? So it does not look like a quadratic equation, but yes, we can convert it by taking LCM. If I take LCM, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1 by 2. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x आ जाएगा. ये कन्वर्ट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. करेक्ट. So directly नहीं है quadratic, but we can convert it into a quadratic equation. Alright. So all we have to do is हमें क्या चेक करना है कि power of the variable 2 है कि नहीं है, maximum power of the variable 2 है कि नहीं है. अगर ऐसा है तो it is a quadratic equation. Is this a quadratic equation? So this is not a quadratic equation. Why? Because the power of the variable is maximum power is 3, not 2. So this will become a cubic equation. This is not quadratic. This is a cubic equation, right? Now let's look at a question. Which of the following are quadratic equations? Okay. Is the first one a quadratic equation? Yes, because the power of the variable is 2. So yes, it is a quadratic equation. What about in the second one? Is it true? Even though we are seeing that the power of the variable is 2, but here I have to take LCM first. If I take LCM, I'll get x square plus 3 equal to x square. When I rearrange it, I will get x square plus 3 is equal to x cube. This is not a quadratic equation. This is a cubic equation. So this is not true. So answer is no. Okay. Third one, again same thing. I have to take LCM. When I take LCM, I'll get x4 plus 1 equal to 3. Rearrange it, so we'll get x square plus 1 equal to 3x square. So again, this is not a quadratic equation because the power of the variable is 4. Fourth part. In the fourth part, I rearrange. I bring all the x square terms to one side and shift this to this side. Minus 3x minus 3 equal to 0. Yes, it is a quadratic equation. Correct? Because the variable power is 2. So always remember, whatever question is given, you have to rearrange it a little bit, bring all the like terms to one side, and then make a comment whether it is a quadratic equation or not. Here in this case, again I have to take LCM. When I take LCM, I will get this. When I rearrange, I will get this is equal to 5x square. This is not a quadratic equation because the variable power is, maximum variable power is 4. So it is not a quadratic equation. Hope this is clear. Now let's look at question number 1 of exercise 5A in the Selena book. This is based on the same concept. Here the question says, find which of the following are quadratic equations. So let's see the first part. Is this a quadratic equation? So I'll just investigate. First I'll open it. A minus b whole square, which is a square, minus 2ab plus b square equal to 5x plus 40. If I bring all the like terms to one side, I will get
equal to 0. So yes, it is a quadratic equation. Correct. The highest power of the variable is 2. That's why. Second question, 5x square minus 8x is equal to minus 21 plus 6x. Correct. When I rearrange, I can directly tell the answer. It is quadratic equation, but still if I rearrange it, I will get in the required format. So yes, this is also a quadratic equation. Third question, is this a quadratic equation? देखने से लग नहीं रहा है, तो इसको expand करके देखते हैं ना. I'll multiply this, so we'll get 3x square plus x minus 12x minus 4 equal to 3x square plus 6x minus x minus 2. 3x square and 3x square I can cancel on both sides. और अगर x square वाली टर्म अगर cancel हो गई, बाकी जो भी कुछ करो, it cannot be a quadratic equation. Is it correct? So therefore, this is not a quadratic equation. So what it will be? Variable की highest power क्या है यहाँ पे? So here the variable highest power is 1. So therefore it is a linear equation. ये एक linear equation है क्योंकि variable की power highest क्या है यहाँ पे? 1 है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे minus 11x minus 4 is equal to 5x minus 2. अगर x वाले टर्म्स को सब एक तरफ कर देंगे तो we'll get a linear equation. So we'll get 16x is equal to minus 2. So this is a linear equation, not a quadratic. Correct? Next question. X square plus 5x minus 5 equal to, इसको भी ओपन कर देते हैं, a minus b whole square, which is a square minus 2ab plus b square. फिर से वही x square और x square कैंसिल आउट हो जा रहे हैं. जैसे x square कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बची. It has become a linear equation. फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे x की पावर 3 है, ऑलरेडी हाईएस्ट पावर 3 है. इस तरफ में अगर मैं ओपन भी करता हूँ इसको, तो भी मुझे x स्क्वायर मिलेगा, x क्यूब तो नहीं मिलेगा. So this is not a quadratic equation. In fact, it's a cubic equation. क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है यहाँ पे. करेक्ट. सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ओपन कर दिया पहले ब्रैकेट को, सेकंड ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो विल गेट 2x स्क्वायर, यहाँ पे 7x माइनस 2, सो 5x, 1 प्लस 4 प्लस 3 8 इक्वल टू 0. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई सजेस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट ऑन योर ओन. एक बार खुद से ट्राई करके देखो, यू विल गेट द आंसर. फिर मैच द आंसर्स फ्रॉम हियर. सो हर एक्सप्रेशन को देख के हमको बताना नहीं है क्विकली, वी हैव टू इन्वेस्टिगेट. थोड़ा सा हम लोग उसको एक्सपैंड करके देखेंगे कि सही में क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. दिस इज ओके. नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या वैल्यू है? द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लेते हैं कोई fx है एट x इक्वल टू a. x इक्वल टू a पे मुझे फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू. तो करना क्या है, सिंपली a को पुट कर देंगे x की जगह पे, तो आंसर आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. अब मुझे फाइंड आउट करना है f1 की वैल्यू कितनी है. तो क्या करेंगे, x की जगह पे I'll substitute 1 minus 3 plus 2 आ गया, which is equal to 0. Correct? So that is the value of the quadratic equation. तो किसी भी पॉइंट पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की अगर हमको वैल्यू चाहिए तो क्या करना है, x की जगह पे वो वैल्यू जो भी चाहिए वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. x इक्वल टू a पे चाहिए तो हमने x की जगह पे a सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया. ओके. नेक्स्ट इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सपोज एट x इक्वल टू a, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है fa, it comes out to be 0. अगर ऐसा हो जाए, then we will say that x equal to a is a root of fx. है ना, और तो इक्वेशन का रूट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 गिवन है, और हमें चेक करना है कि क्या x इक्वल टू 2 एक रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो सिंपली व्हाट विल डू, विल सब्स्टिट्यूट दिस इनटू द फंक्शन. सो LHS 2 square minus 3 into 2 plus 2, 4 minus 6 plus 2, which is equal to 6 minus 6, which is equal to 0. RHS 0 है इसकी. Since this is satisfying the equation, therefore x equal to 2 is a root. Okay.
जिस भी x की वैल्यू पे अगर फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है, दैट विल कॉल दैट वैल्यू एज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम? एट मैक्स quadratic equation can have two roots। मैक्सिमम दो रूट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि पावर क्या है, वेरिएबल की 2 है, इसलिए 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। क्यूबिक में पावर 3 होती है, इसके मैक्सिमम 3 रूट्स हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में एक ही रूट हो सकता है, क्यूबिक में 3 रूट हो सकते हैं मैक्सिमम, एंड सो ऑन। सो एट मैक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव 2 रूट्स। समटाइम्स रूट्स की जगह पे हम लोग सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, एक ही बात है। रूट्स एंड सॉल्यूशन आर सेम थिंग, है ना? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही बात है। सपोज क्वेश्चन इज गिवन, व्हिच आर द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 4, कौन सा है इसका सॉल्यूशन? तो व्हाट विल डू, विल से वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 एट x इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 3, this comes out to be 2 into 9 minus 15 plus 3, 12 plus 3 which is 15, 15 minus 15 is 0। तो वैल्यू हमने चेक की तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब x इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन। करेक्ट। अच्छा, क्या 4 सॉल्यूशन होगा? चेक कर लेते हैं सेकंड पार्ट। तो वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 एट x इक्वल टू 4, वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 3, 16 into 2 is 32 minus 20 plus 3, this is 35 minus 20 which is 15। certainly it is not equal to 0, 0 नहीं हो रहा है, इसलिए x इक्वल टू 4 इज नॉट अ रूट, ये रूट नहीं है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। ओके, सिंपल है, जिस भी वैल्यू पे जो फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है वो रूट है, और जो सेटिस्फाई नहीं कर रही वो रूट नहीं। इज इट क्लियर? So let's see what other type of questions can be asked on this. Now another interesting question. The question says find the value of k for which x equal to 2 is a solution to this quadratic equation। ये इसका सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन है वो कह रहा है। सो इफ x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। therefore k into 2 square plus 2 into 2 minus 3 this should be equal to 0। x की जगह पे मैंने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, so we'll get 4k plus 4 minus 3 equal to 0, 4k plus 1 equal to 0, so k comes out to be minus 1 by 4। so this is the answer। okay, what we did, we substitute the value of x as 2 into the quadratic equation, सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने से k की वैल्यू हमारे पास minus 1 by 4 आ गई। Similarly another question, x equal to, if x equal to 2 and x equal to 3 are roots of this equation, एक quadratic equation हमें given है और उसके रूट्स हमको दे दिए गए 2 और 3, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। सिंपल, again since x equal to 2 is a root, it should satisfy the equation। so 3 into 2 square minus 2m into 2 plus 2n equal to 0। जहाँ पे x लिखा है उसकी जगह पे हमने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, so this will be 12 minus 4m plus 2n equal to 0। so we'll get one equation। I can simplify a little bit, 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, so I'll get this as the first equation। correct। similarly since x equal to 3 is also a solution, वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए। so 3 into 3 square minus 2m into 3 plus 2n is equal to 0। correct। this is 9 9 3 27 minus 6m plus 2n equal to 0। if I rearrange the terms, I'll get minus 6m plus 2n is equal to minus 27। so this is second equation। now I have two equations and two variables to solve। I can simplify by multiplying the second equation by 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
So then we'll get two equations as minus 4m plus 2n is equal to minus 12. Correct? Subtract both these equations. We'll get minus 2m. This gets cancelled out. We'll get here minus 15. M value is equal to 15 by 2. That is the answer. Similarly, we can find the n value by putting it back into the either the first equation or the second equation. The first equation में put करें तो minus 2m plus n is equal to minus 6. Substitute it here, so we'll get minus 15 plus n equal to minus 6. So n is equal to 15 minus 6, which is 9. Therefore, answer is m is equal to 15 by 2, n is equal to 9. Answer. Okay. So what we did, दो equations बना ली हम लोगों ने, दो conditions से, दोनों को solve कर लिया साथ में. When we solve both of them together, we got the answer of m and n. Correct. Hope this is clear. Let's try question number 4 from exercise 5a. Question number 4. It says 2 by 3 and 1 are the solutions of this equation. Equation is given to us mx square plus nx plus 6 equal to 0. Same like the previous question. We'll follow the same method since 2 by 3 is a root of mx square plus nx plus 6 equal to 0. So it should satisfy. So m into 2 by 3 square x square by 2 by 3 रख दिया plus 6 equal to 0. Correct? So we'll get 4m upon 9. LCM ले लेते हैं. So from here, if I take LCM, I will get 6n plus 9 equal to 0. So 4m plus 6n is equal to minus 54. That is first equation. Second equation is 1. Since x equal to 1 is a root, therefore m into 1 square plus n into 1 plus 6 equal to 0 implies m plus n equal to minus 6. This is second equation. Now again we have two equations. First equation and second equation. We have to solve both of them together. So I will write it 4m plus 6n is equal to minus 54. Similarly here m plus n equal to minus 6. So let's multiply the second equation by 6 and then we'll subtract. So 4m minus 6m is minus 2m. Subtracting this will be gone. Minus 54 subtracting plus 36. So this will be minus 18. So m is equal to 9. Correct? We got the value of m. For n, we can use equation number 2. Therefore, minus 6 minus 9, which is equal to minus 15. Answer. So these are the two values. Yes. Hope this is clear. Now let's look at question number 5. It says, if 3 and minus 3 are solutions to this equation, find the values of a and b. It's also similar to the previous question. So we'll say since x equal to 3 is a solution, it should satisfy the equation. So a into 9 plus b into 3 minus 9 equal to 0. X की जगह पे 3 रख दिया हमने हर जगह पे. So we get 9a plus 3b is equal to 9. I can simplify by taking 3 common. 3 common कर देते हैं इन दोनों में से. So we'll get this. Correct. This is the simplified answer. Now, since x equal to minus 3 is also a solution, substitute in place of x, so we'll get 9a again. Minus 3b minus 9 equal to 0 will get. Divide by 3. So we'll get this. Now we have to solve 1 and 2. So solving 1 and 2, we'll get 3a plus b equal to 3. 3a minus b equal to 3. Subtract implies b is equal to 0. If b is 0, then a will be equal to
A will be equal to 1. So therefore, the correct answer is A equal to 1 and B equal to 0. That is the right answer. Understood? In every question, 2 points will be given to you. So we'll satisfy both the points into the quality equation, put it to 0. From there, we'll get 2 equations. We'll solve both the equations together to find the values of A and B. So a quick recap of what we have studied today. First, we have seen the definition of a quadratic equation. Yes, ax squared plus bx plus c equal to 0. A should not be equal to 0. That is the first thing that we studied. Yes. Then we looked at a value of the quadratic equation. Value, how we'll find value for the equation. So in order to find value, we'll substitute the point into the equation of the curve, into the quadratic equation. If the value of the quadratic equation comes out to be 0, then it is a solution. Correct? So that's about the root. And quadratic equation can have maximum 2 roots. Cubic equation can have maximum 3 roots. Linear can have maximum 1 root. Like that. Okay. Then we took some solved examples. Then we took some examples from the textbook itself, exercise 5A. So homework is, please finish the solved examples as well as the exercise questions in 5A. That is the homework. The homework is finish examples, finish exercise 5A, exercise 5A. Okay. So that's about it. Alright. So we'll continue in the next class.